Okay, because this lecture is being recorded, so you'll provide the recording after this lecture. This topic, which is the last topic of your exam, and unfortunately, we are now engaged in online mode. For the C section, I've told it in the class, but it's a good thing because then you have a recording of that lecture, and then you can watch and see this lecture afterwards. So today's topic, which is the very important topic, and it's the last topic of this course, and that is called Holzer method. The Holzer method, as we are doing a multi-degree of freedom system for last 3 or 4 weeks. So we started with the normal mode analysis, which is the finding the natural frequencies and mode shapes for 2 degree of freedom systems. Then we moved on to the one of the application of 2 degree of freedom systems, which is vibration absorbers. So now we are moving towards another method, which is generally used to solve higher degree of freedom systems like 3 degree of freedom, 4, 5, 10, 20, go up to 100 degrees of freedom. So this method is slightly has a different approach than that of the normal mode analysis. Like we develop for in normal mode analysis, we normally develop equations and then use the equation and matrices to find out the frequency equation, ultimately natural frequencies and mode shapes. Now, in this particular method, we generally use a tabulated approach to find out the natural frequencies, and the limitation of this method is that you can only find the natural frequencies. This is what the limitation of this topic, this method. So you can't find natural frequency using this method. For finding natural mode shapes, you have to use like normal mode analysis to find out. Nowadays, we use softwares for actually find out the mode shapes and high degrees of freedom systems. But just to give you a taste how to solve a high degrees of freedom systems, we are now moving towards this topic. So I'm sharing the screen now. Okay, I hope you can now see the screen. So as I told you before, so today's topic that we are going to discuss today is called Holzer method. Holzer method. This method, as I told you before, is a method used to find natural frequencies for higher degrees of freedom. So in this course particularly, we go to maximum up to 4 degrees of freedom. This is our main target. If we can go up to further 5 or 6, but then definitely the time will be more time will be required to solve the problem. So we restrict to ourselves to 4 degrees of freedom. So for this particular topic, we only touch two systems. The one is the mass spring system, or we generally call it as translational system. And the other we will touch is the torsional vibration system. Torsional vibration system. And it is also known as rotational system as well. Clear? So this is our main target for this topic, although we can solve the other systems as well, but for this, and because I know the time constraint, so we will only so your exam will only cover these two systems, mass spring system and torsional vibration system. Now the methods, there are other methods which are used to solve this high degree of freedom system, and just list down the methods. So if you have some time in your life and you come up with some of the other methods, so then you at least you should know about that we have actually heard about at least the name of the method. And and I recommend you to, when you got some time, just go through the internet and just find out one or two lines related to the method, so that if anyone asks you a question, you at least know how this method works. You if you don't know how to solve it, you at least know what is the method. So just I listen out the other methods, and because of lack of time, I'm not able to cover those methods. uh, at the start of the course, I'm planning to include the uh,
the Dunkerless method along with the Wholesome method, but unfortunately, because time is not allowing me to do that, so that's why I only restrict myself to the Wholesome method. So the other methods, and just as I told you before, I'm just listing down the methods, and if you got some time after this course or maybe after this degree, and if you come up with these 10 methods, if you come across these methods, so you actually know the names. So one method generally, as I told you, is called Dunker-Lays method. Dunker-Lays method. This other method is called Stodola method. Stodola method. Another method is called matrix iteration method. Matrix iteration method. Another is called influence coefficient method. Influence coefficient method. And the last and the slightly difficult topic is called Rayleigh's Ritz method. Rayleigh's, not Rayleigh's actually. It's called Rayleigh-Ritz method. Yeah. But for this particular method, Rayleigh-Ritz method, this is used for the vibrations of membranes. Membrane surfaces, or you membranes or surfaces. And its mathematics is very complicated, and that's why it's even included. I have studied this topic in my PhD, so it's a difficult method, but in any case I just give you a name, so then you have at least have heard about the name. So these are other methods that if you got some time you can actually go through these methods, but for this particular course, for this particular, we are only discussing the Holzer method. So if you can ask, if you want any question, you can stop me in between the lecture. Okay. So let's start with the, so in this topic, because again, we have a very limited time. So we only cover the torsional vibration system, or we will solve the 4 degrees of freedom in this lecture. We will solve the 4 degrees of freedom torsional vibration system. This is our target today. We can only solve one problem, and I will actually upload the sample solution of 2 other problems. The one is the other torsional method, and another will be a mass spring system. So that at least you have an idea that if you come across the even the mass spring system in your exams, you exactly know how to solve it. Okay. So for this particular method, I've just selected an example, and this is the sample problem. Just this is your problem. The problem states, analyze the following linear torsional vibration system. And this is the diagram. This is the diagram of the system. Rotating at 1440 RPM with the power transmitting elements. So we have actually power transmitting elements, and you have studied this detailed in the DME course. And determine its natural frequency using Holzer method. So main ideas is to analyze this torsional vibration system and determine its natural frequencies using Holzer method. So if in exam, if it is not written that you have to find it using a Holzer method, you can even find it using norm mode analysis. It can, this problem is even solvable with a norm mode analysis, but as you know, it's not that easy. Because if you have 4 degrees of freedom, like in this case, you have 4 equations. So definitely it's difficult. And just for a time comparison, if you solve this problem with the norm mode analysis method, it will roughly take about 4 to 5 hours. And if you solve it using the probably the Holzer method, you can only solve it in about 30 minutes. So this is the time, or you can solve it with both methods, but the time requirement for the Holzer method is quite less than the as compared to the normal mode analysis सर method. एक And क्वेश्चन है मेरा। yes, please. सर ये 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसका मतलब ये है हमारे पास यहाँ पे 4 सिस्टम है, लाइक बेरिंग्स, पुली,
गियर वन एंड पुली वन। इस तरह हमें पता लगेगा कि ये चार सिस्टम है, क्योंकि आपने जी कहा था जो नंबर ऑफ सिस्टम होते हैं वो नंबर ऑफ आपके पास जितने मैसेज आपके पास होते हैं। जी, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, जब भी डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। Okay, so I've just come to your question later. Just I'm going to the problem. So now, what is actually a problem? A problem is that you have a shaft. So this is your shaft. This is your power source. Power source means it is actually providing your power. So it's a motor, and you have a coupling. This is called rigid coupling, and you have designed the coupling in your DME course, and then you have elements. Now, power transmitting elements means the element that can transmit power from one point to another point. So, for example, let's say in this case, so we call it this is a chain sprocket system. Chain sprocket means, it's a chain gear system or chain sprocket system, and you have studied this in your DME course. So this is a chain sprocket. This is a shaft connecting to the motor shaft through a coupling. So this is a shaft. You let it, this is the first shaft. Then you have the chain sprocket. Now chain sprocket is, as you know from your observation even, that this is a power transmitting element. You have seen in your bike, in your cycle. This is the power transmitting element. Now moving onward, there's a bearing. This is the bearing. Okay. Now the purpose of bearing is uh, to support the shaft. It is not a power transmitting element. Bearing is not a power transmitting element. It is the element that is used to support the shaft. Otherwise, the shaft will wail or vibrate and can break the structure. So the bearings are placed to support the shaft on a structure. So bearings are not considered as masses. I'm stating it very clearly. Bearings are not considered as masses. Only the power transmitting elements are considered as masses, or the masses are considered in vibration system. So these are used to support the shaft. Clear? So then we have an element 2, which is a pulley, and the edges of pulley contain belts, and this is again another power transmitting element. So you have a pulley and connected to some other pulley. We have no concern about that. Then we have this shaft. Then we have a gear. So we have given a gear to, probably it's a gear train, a small gear train, small gear train. And then we have another bearing. This again used to support the shaft. And then we have finally another pulley. So we have four elements. Now these four elements, so we have actually a pulleys, gears, chain sprockets, and probably there are other power transmitting elements that is actually has a, so these elements has masses. So as if you can see in the hint, treat the gears, pulleys, and chain sprocket as a solid disk. So in this case, we're considering this elements as a solid disk. So, and why we're doing that is because we have to consider this element as M. It contains masses. Now, because we have four masses, this is the first mass, this is the second mass, this is the third mass, this is the fourth mass. You do not consider a shaft to be, also shaft contains mass, but in this case, shaft is a source of stiffness. So your power transmitting elements are your masses. So we have four masses. Clear? So it means that this system is 4 degrees of freedom. Clear? And as told you, because bearing is only used to support the shaft, it is not a power transmitting element. That's why you can't consider a bearing to be a mass. That's why these are only considered. Um, and coupling as a, and the shaft torsional stiffness. Now, shaft is a torsional stiffness. We only recommend it as right as KT. K is a stiffness. And by the way, I actually forget the variation. When you are torsional stiffness, it's always with the capital letter. Normally,
Normally what happens in the books, that if you want to determine, if you want to represent a linear stiffness, it is small k. If you want to represent the torsional stiffness, it is generally written as like this. Okay? So it's a capital K. But you can also represent K this as KT. Just to say it's K is the stiffness and T is the torsional. Torsional happens in the system in which you have the rotation. Okay? Those system which rotates actually contains the torsional vibrations or torsional stiffnesses. So shaft can be 5, 6, 7, 8. It doesn't make any difference. But you have to actually focus on number of masses. So because there are 4 transmitting elements, so 4 masses, so then you have 4 degrees of freedom. Clear? Any question you have? अगर आपने पूछना है, कोई क्लियर करना है, दोबारा एक बार पूछना ताकि मैं आगे चलूं. No, sir. No, sir. No questions. जो मुझे किससे क्वेश्चन पूछा था उनको प्रॉब्लम समझ आ गई है? अगर आपने वो भी कोई चीज पूछनी है तो फिर पूछ लें बेशक अभी. ओके. सो बेसिकली ये सारे बात बताने का आपको मकसद सिर्फ इतना था कि एक्चुअली वी वांट this problem is very similar to a DME problem. If you remember your DME problem, you've actually done this problem. And what you've done actually in this is, you know the distances, you know the, let's say, distance between this element and this element, you know distance between bearing and this element, and so on and so forth. So what you're interested in DME is to find the diameter of the shaft, if you remember. And this is, by the way, is the design of shaft on strength basis. Okay, on strength basis. Strength means you use the stress, and you remember we have used this formula. If you remember, you have used this formula to design the shaft. This is the formula. This is always used for designing of the shafts. Anyhow, and it has a certain complication if your shafts are complicated enough. Anyhow, so now what we want to do here. So let's say if you take a step. So the first step, if you want to build this system from scratch, so the first step is to design power transmitting elements. This is, and you know, probably DME, in DME course, and this will be elaborated in DME 2 course as well. So the first, when you start to design, I'm not talking about vibrations to this point. I'm just talking about if you want this kind of system, like you want to transmit powers at different point. This is what happens with the, if you remember, if you just have observed, it happens in the engines. So engine has a double pulley system with the crankshaft. One pulley is connected in most of the cars. One pulley is connected to the your generator, and the second pulley is connected to your either your air conditioning system or your water body or your probably the power pump, which is the hydraulic steering pump. Now if you just draw this diagram, so we have a crankshaft here, just to give you an idea, practical idea, that this is also happens in reality. So this is a crankshaft, there's a coupling. It's not a coupling, basically same shaft. So we have two pulleys. So one pulley is connected to generally a generator, and other pulley is connected to probably a power pump, or probably the air conditioning compressor, or probably the water pump. And it could be, in some cars, it could have only one belt. So this is what happens. And if you look at even in between, so there's a chain sprocket here. No, sorry, not chain sprocket. Nowadays, there's a stepper pulley. Sorry, timing pulley. So this is exposed, and you can, if you look at the car on the probably the left side of the engine, you can, this is exposed. This area is exposed, so you have two pulleys here. But this stepper or timing pulley is actually hidden. There's a cover, there's a plastic cover on it. But this shaft also contains a timing pulley, and this is connected actually to a timing belt to a cam pulley. This is the cam pulley.
Then the basic purpose of explaining this is just this happens in reality. So when you design an engine, they exactly know that these are called parasitic loads. In cars, these are called parasitic loads. Parasitic means these are actually, we do not want it to, because definitely it consumes some power of the engine. What we actually want is that all of the power that is generated by the engine is transmitted to tires. So we get the maximum brake horsepower at the tire. But because there's a parasitic load, like you have to run the cam in order to operate the valves, and they also consume your load. You also have to run the generator from the same pulley mounted on the crankshaft. So and generator is important because you have to charge the battery all the time. There's another pulley which is also you have to drive the air conditioner, because air conditioner is very important. You have to drive the water pump, because if it's not circulating, your car will probably heat up. Or you require power pump, which is in those cars which have a hydraulic steering or the power steering, you generally requires the um, hydraulic power motor or pump to actually pump the oil. In case of electronic power steering, we generally this actually crankshaft runs the power motor, which is electric motor. In any case, so if you just look at this, even a crankshaft, it's a problem like this. It's problem like this. Okay, and there are many other examples. I'll just give you one. Now, so first step is to design the power transmitting elements, which means it could be a timing pulley, it could be a simple pulley, it could be a V pulley, it could be a chain sprocket, it could be a gear. Clear? This is your first part. The first task is to, by your defined power, which is your power, is whether your transmitting element can handle that power or it cannot break during the transmission. This is your first step. The second step is to design the shaft for mounting power transmitting elements. Okay, this is your second step. So you design a shaft, and that purpose is to mount that elements. So definitely you have to rotate the elements, and the element can only rotate if they're mounted on the shaft. And in DME, you design the shaft, which means you determine the diameter of shaft based on the load on the elements. And I think you can second me in that, because you have studied the DME course, you have designed the shaft, and you know that when you design the shaft, what you exactly need to find is the diameter of shaft based on the loads on the individual loading on the power transmitting element. Now, why we do vibration analysis in this problem? The third step is to design check against vibration failure. And why we do that? Now, what happens is that you have designed the diameters. Let's say you say diameter here is probably at 20 mm, at the probably at chain sprocket it is at probably 18 mm, and so on and so forth. And you have actually gone this approach to design the diameter of shaft. Now, even if you are very much sure that this structure or this system will not fail, its element will not fail, its shaft will not fail, because you have actually designed all the elements, it can still fail with vibrations. And by designing these systems using on strength basis, you have designed the properly elements and shaft, you have no guarantee that this system will not fail with vibrations. So what you have to do is to first design, actually follow two steps. First two steps, design power transmitting elements, and then design a shaft for those power transmitting elements, and to check whether this system will fail in vibrations, fail due to vibrations or not. And that third step is the main purpose of this question. Okay, you have done two steps. You have done two steps with DME. Now we are checking the same system you designed in DME is now whether the system will fail or not with vibrations. And
for that you have to follow a step, and that's why this course is, or this topic is actually focused on. Now, for this particular topic, or for this particular question, so you have to first convert this problem into a vibration problem, which means vibration contain mass and stiffness. Now, in case of rotational systems, you have J, which is a rotational mass moment of inertia, rotational moment of inertia. J is called the mass moment of inertia, and K is the stiffness, torsional stiffness. Now, if you have seen this hint, and by the way, I'm just giving you a reminder in between the lecture that this topic is not uploaded. I've seen it. This is not uploaded in the classroom before, in the YouTube before. So this will be the first time that I'm actually covering this topic on the online. So anyhow, it's very important to understand, and this will be a part of the final exam. So be attentive to understanding the question. Okay. So the pulleys are treated as J, which is the rotational masses, and the shafts are treated as K, which is the torsional stiffness. So we know that the natural frequency for the rotational system is nothing but KT over J, and we have seen it probably in the first two lectures of this course. So KT is torsion and J is the mass moment of inertia. Now, because this system has 4 masses, so it definitely has 4 degrees of freedom system. So it has 4 natural frequencies. So we have omega 1, omega 2, omega 3, and omega 4. So we have 4 degrees of freedom. So we have 4 natural frequencies. The main purpose of this question is to find those 4 natural frequencies and see whether any of the natural frequency is coinciding with its excitation frequency, which is omega is equals to 2 pi into 1440 divided by 60. So if I just find out this particular frequency, so it's 2 pi multiplied by 1440 divided by 60, we get about 150.8 radians per second. Yeah, this is your forcing frequency, because your shaft is moving and shaft is connected to a motor. Motor is your excitation source. So you know the RPM of motor because this is standard RPM, probably the standard RPM of the motor. You know the omega. Now what you want to know is all the natural frequencies. Why? Because then you have an idea that probably one of your natural frequency may be coinciding with the forcing frequency, and your system will resonate and will break. So the idea of this topic is to find those 4 natural frequencies. This is the idea, and to see whether resonance is there or not. Okay. सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, अभी आपने अभी Please. कुछ कहा था कि ये टॉपिक जो है इंक्लूड कुछ कह रहे थे, एकदम से मैं नेट चला गया था. This is included in your final exams, and it's very अच्छा important. अच्छा, ओके सर, ओके. And just I've told you that this is not previously uploaded on the YouTube. So this is the first time I'm covering this topic online. So that's why I will definitely upload this lecture afterwards. But this is very important regarding your final exams. ये सर काइंडली अपलोड कर दीजिएगा ताकि रिकॉर्डिंग देख लें हम. जी ठीक. Okay, so the first step is to convert, and how to convert it, just explain it. To convert a problem into a Holzer method problem. So Holzer method basically is a tabulated method. You have to draw tables to find out, but you have to first convert the problem to solve it using Holzer. So first we find out, okay, the first step is to consider coupling as a rigid support. So this is, you consider this as a rigid support. This is the first step, and it is written in the hint. You see here, coupling as a rigid support. So the first thing that you'll remember is to start numbering from the opposite side of the rigid support. So we start numbering on the masses. So this is your first mass, this is your second mass, this is your third mass,
This is your fourth mass, and you have to also name it the rigid support as a mass. It's a fifth mass. Always. Why? Because if you do not number it from the opposite side, this problem is not solvable using Holzer method. So you have to first number it from the opposite side of the fixed support. So as it is written that coupling, consider coupling as a rigid support. So I've just replaced a coupling by this symbol, which means it's a rigid support. So you have to start numbering, and you also number you have to also give a number to the rigid support as well, which is 5 here. Okay. So let's say this is J1, this is J2, this is J3, this is J4, and this is J5. Find J's, all J's. Now, if you consider all as a solid disk, which means the say for the J for a solid disk is nothing but 1/2 mr square. And if you don't remember this, let's go to your FSC. These are written in the FSC. For a hoop, the J is mr square. For a disk, it's half mr square. Clear? Now, practically, not even a gear, not even a hoops, not even a chain sprocket or pulleys are perfectly disk. They are in between a disk and a hoop. And if you want to solve a real problem, not a part of this exam, but if you want to solving a real problem, you have to find the J using experimental method. And if you remember, I've explained this in experimental method, and that is the compound pendulum. If you want to remember it, just go to the previous lectures. We have explained the compound pendulum. We have also explained how to find J of a bodies in which theoretically you can't find the J. But as it's an experimental method and I cannot engage you in exams, so I've just given a hint. And by the way, just an advice to you, almost all questions contain hints. So please first read the hints. Hints are very important. Okay. So if it's a disk and you consider disks, no problem. It's half mr square. Now, everything is given in the numerical. So mass of gear 1 is 2.35 kg. So we have only considered the element which is mounted on the main shaft. We have no concern with this gear because it's mounted in the different shaft. So we have no concern with this gear. So it's the gear 1, which is here, is 2.35 kg, and the pitch radius is 1.155 millimeters. So pitch radius, if you remember from your DME course, it's a radius at which you're actually there's a contact point at the pitch radius. So in this case, we have to take the pitch radius here. So just writing here, so J1. So J1 means the mass moment of inertia of element 1, which is pulley 1. So 1/2, and what is the mass of pulley 1, which is 1.85 kg. So 1.85 kg into what is the pitch radius, which is 135 millimeters. So remember, it's 0.135 square. So millimeter we convert into meters. So J1 will come out to be 0.0017. Sorry, not 00. It's advisable to use calculator when I solving the problem, that you have actually good understanding. 0.017 kg meter square. This is J1. Because we're considering it as a disk, so we can use this relation, half mr square. So for J2, now the second element is the gear 1. So gear 1 has a mass of 2.35 kg. So half into 2.35 into, and the pitch radius is 155 millimeters, which is 0.155 square using this relation. So that come out to be 0.028 kg meter square. This is J2. I'm just finding J3 here because I'm just doing it on the same page so that this diagram is in front of you. Okay.
So J3, which is the mass moment of inertia of pulley 2, which is 1 by 2. What is a pulley 2? Pulley 2 has the uh, mass of 1.53 kg, and the radius is pitch radius is 109 mm, which is 0.109 square, and that come out to be 0.009 kg meter square. So the last element, which is J4, is the basically a pulley chain sprocket. Sorry, so chain sprocket has the mass of chain sprocket is 0.75 kg, and its radius is 135 millimeters. So it's 1.35 square, and that value come out to be 0.007 kg meter square. Clear? So now we have find out the 4Js. Clear? Now for the J5, it's always will be infinity. We consider the mass of the rigid support to be infinite. And I think so you can imagine it, because if you have ever placed this, if you simplified the system in such a way that your coupling is a fixed support. Fixed support means it has such a higher mass that this, even if it moves, the rigid support can't move. So it's for this problem, we generally take this J5, the mass of the rigid support, as infinity. This is, by the way, is a common practice in solving problems using Holzer method. Excuse me, sir. Yes. सर जो गियर 2 है सर, हम इसकी कैलकुलेशंस तो नहीं करेंगे ना? नहीं, it's mounted on a different shaft. Okay, sir. Okay, sir. Because It's we are clear, sir. considering a system on which the shaft which we are considering is actually all the elements mounted on that particular shaft. We are actually analyzing that system. I've also given the masses of gear 2 and the radius, but it has nothing to do with this problem. Yeah. Okay, sir. Okay, sir. Okay, so this is our first step. Now, if you've seen the problem, the KT is directly given. KT1 is given, KT2 is given, KT3 is given, KT4 is given, and this is how you label it. This is KT1, this is KT2, this is KT3, this is KT4. Now, if it is not given, so you know that I'm just, if I will not directly give this value, I will give the formula, which is GJ over L. And the relation is G is a modulus of rigidity, which is a material property. The J is the torsional moment of inertia or the area moment of inertia, and L is the length between two elements. Clear? Here I have directly given it, but if it is not given, you have to find it using this relation. Torsional stiffness is nothing but, and I'll give you the relation in the reference formula, which is Gj over L. G is the modulus of rigidity. J is the area moment of inertia, which is probably pi by 32 or pi by 64. Just confirm it from internet. So it's a torsional moment of inertia. And L is the length. Length is basically the distance between in between two elements. This is the length. So let's say if this is KT4, we will take the length between pulley 1 and gear 1. In this problem, it's given directly. Okay, the last step before we actually starts the Holzer method is to normalize it. So I'm using a normalization. And what do you mean by normalization? Is you have two values of system. One is the J values, and one is the K values. Clear? So I just write the values again so that so J1 is 0.017 kg meter square.
J2 is 0.028. J3 is 0.009. J4 is 0.009. J4 0.007. is J4 0.007. 0.0. Okay. And J5 is J5 is infinity. infinity. Yes. KT1 वो बताएं 1.38500. 38500. KT2 is 49500. 49500. KT3 is KT3 41433. 4133. And last Clear? one, sir, 32325. 32 Yes. So this is all the values that we have actually extracted from problem. Normalization means that we first select the lowest value in all these values in this column. So lowest value is this. Lowest value. This is the common tradition in solving the Holzer method. So if we take a lowest value here and lowest value here, and to divide all values with this value. Okay, this is the tradition. Now, whatever the lowest values, it has no concern. It could be 1, 2, 4, 5, whatever. Whichever is the lowest value, take that particular value and divide it by that lowest value. And same you have to do in the stiffness. Take the lowest value and divide it clear. So let what I'm taking it, let j equals to 0.007. This is my reference value, and I'll just explain later in the end of the course that why I'm using this. J is a reference, which is point. This is your reference value. This is your reference. And here kt is equals to 32325. This is your reference value. This is your reference value. So if this will come out to be 2.43 J, which means 2.43 times this. Okay? This is 4J, which means 4 times this value. This is 1.29J. This is 1J. And by the way, if you divide anything infinity, it will still remain infinity. Yeah. Now, if you divide this here, this value will be 1.19K. And by the way, K is your reference. So just write K. Just write K here, not KT, just K. At a capital. Okay. This is 1.53K. This is 1.28K. And this is 1K. When you have done this, now we are starting the Holzer method. Any question up till now? By the way, up till this point, this 40% of the marks will be up till this point of the question. Any question? No, sir. Okay. Now we are starting the method. And for method, you have to develop a table. So I'm just developing a table here. So actually, we have to develop the 8 columns. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Clear? And you have to label it at every column. So first column is labeled as position. Just draw a line here. Position. The second will be labeled as J. The third will be labeled as J omega square. The fourth will be labeled as theta. Fifth will be labeled as J theta omega square. Sixth will be labeled as summation J theta omega square. Seven will be labeled as K. And last will be labeled as summation J theta omega square divided by K. ये स्टैंडर्ड लेबलिंग है, ठीक है। आपने जब टेबल ड्रॉ करना है तो दिस इज द स्टैंडर्ड लेबलिंग. If you just practice this 1 or 2 times, you will actually remember it. It's not a big deal. Now, we are starting with just 1, 2, 3, 4, 5. So we just draw a line here. Okay. So, okay. So position means this positions 1, 2, 3, 4, 5. So just write here 1, 2, 3, 4, 5. Just write J values of these positions. So J1 is this position, J2, J3, J4, J5. So what is J1? The converted value, normalized value, not the actual value, which is not 0.017, but right here 2.43. अगर आप ये नहीं पुट करेंगे ये अनसॉल्वेबल है, मैं आपको बता रहा हूँ. 4.0, 1.29 और 1 और लास्ट इज इंफिनिटी. ये समझ आ गया सर को? आपने जो कन्वर्टेड वैल्यूज है वो लिखनी है और के Yes, की जगह sir. पे के की वैल्यूज लिखनी है, ठीक है. दिस इज 1.19, दिस इज 1.53, sorry, 1.53, 1.28 this on 1.28 and 1. 1. ठीक है. अब जो हमारा बेसिक जो उसमें पर्पस है वो क्या है कि हमने ओमेगा की वैल्यू एज्यूम करनी है फॉर एवरी आइट्रेशन, ठीक है. सो हम पहली जो आइट्रेशन है उसमें ओमेगा की वैल्यू हम एज्यूम कर रहे हैं. चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, यहाँ राइट साइड लिखता हूँ, जगह है थोड़ी सी. तो फर्स्ट आइट्रेशन है उसमें ओमेगा की वैल्यू लिखते हैं 0.12 रेडियंस पर सेकेंड. आपको जो पहला सवाल आएगा क्यों, इस क्यों का आंसर मैं आखिर में दूंगा कि क्यों हम ये वैल्यू अज्यूम करें, ठीक है. ये मैं एड्रेस आखिर में बिल्कुल तफसील से करूंगा, अभी सिर्फ आप ये देख लें. मैंने एक वैल्यू अज्यूम कर ली 0.12. अब मैं इस टेबल को इस अकॉर्डिंग फिल करूंगा. कैसे? अब इस कॉलम को जरा देखें, ये है j इंटू ओमेगा स्क्वायर. सो j मल्टीप्लाई बाय इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर. तो ये वैल्यू बनेगी, करते जाए, 0.03, 0.06, 0.02 और 0.01 और इन्फिनिटी, ठीक है. ये पॉइंट समझ आ गया? उसके बाद हमने क्या करना है, हमने जो डिस्प्लेसमेंट लेनी है इसको 1 एज्यूम करना है, ठीक है. जो पहला आपने जो आइट्रेशन करनी है थीटा के साथ वो 1 एज्यूम करनी है कि यूनिट डिस्प्लेसमेंट. इसका मतलब फिजिकली ये है कि आपने सिस्टम को एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट देके छोड़ दिए. जब भी आपने सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसीज डिटरमिन करनी है तो मैं आपको पहले बताया था, हम सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं और फिर इसको छोड़ देते हैं, उसको अपनी विल पे वाइब्रेट करने देते हैं. तो यहाँ पे भी हमने यही प्रोसीजर करना है, ठीक है. अब आप इस कॉलम को जरा ऊपर हेडिंग दे के करते जाएं. हेडिंग का मतलब क्या है, इन दो को मल्टीप्लाई कर दें आपस में, 0.03. यहां पे फिलहाल आपने यही लिखना है जो इस कॉलम में, ठीक है. आगे जाकर बताऊं क्या होगा. इसके बाद के और यहां पे क्या है, दिस डिवाइड बाय दिस 0.18, ठीक है. जो नेक्स्ट
आपने रो फिल करनी है, वो इस तरह फिल करनी है कि दिस, और से देखिएगा, थीटा माइनस समेशन जे थीटा ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय के, ये आपने करना है, ठीक है। तो दोनों का यूनिट सेम है, थीटा का यूनिट रेडियन और समेशन जे थीटा ओमेगा स्क्वायर और के का भी यूनिट वही है, सेम यूनिट है। आप इनका आगे देख लीजिएगा, एक चीज सेम यूनिट है। इसको आप डिवाइड करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे, तो यहां पे आपने लिखना है 0.82। जिसको ये पॉइंट समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ ले। आपने जो ये थीटा वाला कॉलम है और लास्ट वाला कॉलम है, जो भी नंबर्स इस पे आएंगे, इसको आपने हमें सब्ट्रैक्ट करना है, प्रोवाइडेड कि थीटा पहले हो माइनस आखिरी वाला कॉलम। चाहे दोनों वैल्यूज माइनस हो, चाहे दोनों वैल्यू प्लस हो, चाहे कोई एक प्लस हो कोई माइनस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर ये काइंडली दोबारा बता दें। जो आपके पास जो थीटा का, देखिए पहले दो कॉलम समझ आ गई, ये तो हमने प्रॉब्लम से निकाले हैं, जे वाला तो हमने प्रॉब्लम से निकाले, जो के भी प्रॉब्लम से निकाली, दोनों चीजें वो तुम्हारे प्रॉब्लम में दी हुई है। जो आपने ओमेगा लेना है वो एज्यूम करना है, उसको मैं एड्रेस आखिर में करूंगा। जो थीटा है आपके पास, वो आपने पहले 1 से स्टार्ट, यूनिट डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करना, तो हमने 1 से स्टार्ट किया और कॉलम फिल करते गए, ठीक है। जो हमारे पास लास्ट कॉलम आया, उसमें कोई ना कोई नंबर आ जाएगा, जो भी नंबर होगा। अब जो हमने अगला रो स्टार्ट करनी है, सेकंड रो, उसके जो थीटा की वैल्यू है वो हमने कैसे लिखनी है, दिस माइनस दिस, यानी कि दिस थीटा माइनस आखिरी वाला कॉलम, जो भी वैल्यू आएगी वो अगले के स्टार्ट में लिखनी है, यानी कि इस स्टार्ट में। देखिए 1 माइनस 0.18 क्या होगा, 0.82, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने अब हेडिंग देखें, अब हमने इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 0.06 मल्टीप्लाई बाय 0.82, ठीक है। समझ आया? 0.06, सॉरी एक सेकंड, नहीं गलती होगी, जस्ट होल्ड, जस्ट होल्ड। सॉरी ये 0.18 नहीं आता, 0.025, सॉरी, एंड दैट इज 0.975। ये मैं माइनस ही किया, ठीक है। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें, दैट विल बिकम 0.06। अच्छा, अब समेशन वाले में आपने क्या करना है, ये आपने बस ये दो स्टेप में रखनी है, आपने इसमें से ये ऐड करना है और यहां पे लिखना है, ठीक है। समेशन का मतलब क्या होगा, सक्सेसिव समेशन, यानी कि ये जो वैल्यू आएगी प्लस इसको आपने ऐड करना, तो ये क्या बन जाएगा, 0.09, ठीक है। क्या करना है आपने, ऊपर का समेशन वाला कॉलम और पीछे वाले का जो समेशन के बगैर वाला कॉलम है, जितना थीटा ओमेगा स्क्वायर वाला, इन दोनों को आपस में ऐड करना और यहाँ पे लिख लेना। आगे आपने वही डिवाइड करके लिखना है, सो यू गेट 0.06। यहां तक समझ आ गई? अगर वो यहां तक समझ आ गई, अब इसके अलावा इसमें कोई खास चीज नहीं रहेगी। ये इसी तरह पूरा अपने टेबल फिल करना है, ठीक है। उसी तरह इसमें से इसको माइनस करें, आपको आ जाएगा 0. जस्ट होल्ड ऑन, 0.91, ठीक है। दिस इज 0.018, दिस इज 0.11 एंड दिस इज 0.084। बिल्कुल सेम वही तरीका है, बिल्कुल वही तरीका किया है मैंने, इस तरह, ठीक है। उसके बाद फोर्थ रो में आ जाए, इसको हम अब आपने माइनस करना है, कैसे, 0.91 माइनस 0.084 विच इज 0.826, फिर को मल्टीप्लाई करें, दैट इज 0.008, समेशन ऐड करें तो 0.1 और 0.1, ठीक है। और यहां पे आएंगे तो 0.826 माइनस 0.1 इज 0.726। और आप आगे इसको हल नहीं कर सकते, चूंकि अगर आप आगे करेंगे तो इसे मल्टीप्लाई कर इन्फिनिटी आता जाएगा, तो इसको यहां पे आपने स्टॉप कर देना है। ये इस वैल्यू को आपने नोट करना है, ये वाली वैल्यू, ठीक है।
ये पॉइंट समझ आ गया? समझ आ गया ये पॉइंट यहां तक? यस सर। अच्छा, अब आपने क्या करना, अब आप कहेंगे क्या इसका फायदा क्या हुआ? अभी जब अगला कॉलम हम फिल करेंगे इसी तरह, हमें तब फायदा नजर आएगा दोबारा। हमने क्या करना है, सेम प्रोसीजर रिपीट करना है, 1 2 3 4 5, सेम प्रोसीजर, वही वैल्यूज 2.43, 4.0, 1.29, 1.0 और इंफिनिटी। ठीक है, ठीक है। और इसी तरीके से हमने के की भी, क्योंकि ये दोनों सिस्टम प्रॉपर्टी थे, ये चेंज नहीं होती कभी भी। ठीक है, ये सिस्टम की, ये आपने वही उतार लेनी है जैसे उससे कॉलम में। ठीक है, अब ओमेगा मैं अज्यूम कर रहा हूँ 0.3। आप पूछेंगे ये कैसे पता लगा, ये वाला क्वेश्चन मैं आखिर में एड्रेस करूंगा। ठीक है, लेकिन मैंने अब एक नया ओमेगा अज्यूम कर लिया। अब मैंने इस तरीके से इसको फिल करना है, सेम तरीका, सेम मेथड से ओमेगा में फर्क है। ठीक है, तो लिखते जाए 0.22, 0.36, 0.12, 0.09, 1, 0.22, 0.22, 0.18, 0.82, 0.29, 0.51 और 0.33। सब्ट्रैक्ट कर दें तो 0.49, 0.06, 0.57, again the same thing, divided 0.45, 0.04, 0.003, 0.6, 0.6. And when we subtract it, it got minus 0.56. Any question up till now? कोई सवाल अब तक? ओमेगा की वैल्यू के अलावा, वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा, उसके अलावा कुछ सवाल है तो बताएं। समझ आ गई यहां तक? क्लियर हो गया? सुन भी रहे हैं कि नहीं? डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया? आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। अच्छा, मैंने कब कहा सो ही गए पता नहीं किधर। अच्छा, अब हमने क्या देखना है, अब हमने ये देखना है कि हमने साइन कन्वर्जन देखनी है। ठीक है, साइन कन्वर्जन कौन सी? बिटवीन प्लस एंड माइनस। समझ आया? ये देखें, आपने गौर किया, यहाँ पे प्लस साइन था, यहाँ पे माइनस साइन हो गया। ठीक है, इस पे, इसका मतलब ये है कि हमारी ओमेगा 1 इन दोनों के दरमियान में कहीं है, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी इन दोनों के दरमियान में कहीं है। ये पॉइंट समझ आया? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो आपकी लास्ट वैल्यू है, सबसे लास्ट वैल्यू थीटा की, उसके आपने साइन कन्वर्जन पे गौर करना है, मतलब प्लस से माइनस या माइनस से प्लस। जब ये साइन चेंज होगा लास्ट वैल्यू का, इसका मतलब फिजिकली ये है कि हमें एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिल गई है, वो इन दोनों के दरमियान में है कहीं। पहला आपका टास्क है 4 फ्रीक्वेंसीज हंट करना, बस, कि वो 4 फ्रीक्वेंसीज हैं किधर है। जब आप वो हंट कर लेंगे, फिर हम उसके एग्जैक्टली डिटरमिन इसके बाद टेबल के बाद करेंगे कि वो क्या है। ये पॉइंट सब क्लियर हुआ है सारों को? जो लास्ट वैल्यू है थीटा की, इसकी साइन कन्वर्जन पे हम बहुत गौर से देखेंगे। अब मैं कर रहा हूं कि अब मैं, हमें एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिल गई है, 3 रह गई है। ठीक है, अब मैं दोबारा ओमेगा की वैल्यू अज्यूम कर रहा हूं, दैट इज 0.9।
ठीक है सर सेम। जी जी इसमें फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। मतलब सर ये जो नेगेटिव वैल्यू आई है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो सर इसमें हमें क्या पता चलता है कि इससे हमारी फ्रीक्वेंसी सर कम हो रही है? नहीं नहीं, और सर क्या इससे पता लगता है कि इन इन दो एज्यूम वैल्यूज के दरमियान नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अगर साइन चेंज ना होता, सुन ले, अगर साइन चेंज ना होता, वो भी प्लस होती, ये भी प्लस होती, इसका मतलब है इन दो एज्यूम वैल्यूज के दरमियान नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं है। ये पॉइंट समझ आया मेरा? यस सर। तो मैं कोड टेबल फिल करता हूँ, फिर मैं आपको क्लियर, अभी अभी आपको क्लियर समझ आ जाएगा। मैं कोड टेबल फिल करने दें मुझे, ठीक है? जी 2.43, 4.0, 1.29, 1.0 और इंफिनिटी, 1.19, 1.53, 1.28, 1.0। अब आपने, मैंने एज्यूम वैल्यू 0.9 ली है। सॉरी, ये इन्फिनिटी नहीं है, कोई इन्फिनिटी ना समझे, मैंने ओमेगा लिखा है। अब फिल करें इसको, ठीक है? ये देखें 1.968, 3.24, 1.044, 0.81 एंड इन्फिनिटी। ठीक है, अब वही आपने 1 से स्टार्ट करना है। 1.968, 1.968, 1.653। अब ये ज़हन में रखना है, इसको इसको इससे माइनस नहीं करना है, इसको इससे माइनस करना है। 1 माइनस दिस, तो आपके पास आएगा -0.653। साइन जो भी हो, साइन को आपने नहीं देखना, माइनस हो प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। -2.115, जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ही रहेगा। अब जब आप इसमें ऐड करेंगे, इसको हमने ऐड करना है, मतलब 1.968 प्लस -2.15, तो ये आपके पास, ये चूंकि इस माइनस है, ये अभी भी माइनस ही रहेगी, वैल्यू छोटी हो जाएगी, रहेगी माइनस में, ठीक है? दैट इज -0.147, ठीक है? डिवाइड करेंगे 1.53 से, सो -0.096। अब ये बात अब फिर गौर से देखनी है, ये है -0.653 और ये है -0.96। जब आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये नहीं कहना कि ये माइनस है तो ये माइनस रह रहे, आपने करना है 0.653 माइनस -0.96, विच इज -0.653 प्लस 0.96। ये पॉइंट समझ आया? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपने इन दोनों को आपस में माइनस करना है, चाहे वह माइनस हो चाहे प्लस हो। जब आप दोनों माइनस डालेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, ठीक है? तो ये आंसर आएगा आपके पास, क्योंकि ये स्टिल बड़ी वैल्यू है, तो आपके पास आएगा 0.557, ठीक है? उसके बाद में से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट -0.582। अब देखें, दोनों को आपने आपस में ऐड करना है। अब दोनों माइनस है, तो दोनों एक्चुअली में ऐड हो जाएंगे विद अ माइनस साइन, ठीक है? जिस तरह मैथ में करते हैं, ठीक है? जो बिल्कुल इजी से, जो सिंपल सा मेथड है, -0.729, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -0.569। अब उसी तरीके से दिस प्लस दिस, और यहाँ पे आपके पास आएगा 0.012। ये देखें, ये 557 और ये 0.5 में बड़ी है, तो ये होगा -0.557 माइनस -0.5, विच इज -0.557 प्लस 0.569, तो फिर आंसर प्लस 0.012 आएगा, ठीक है? साइन में अगर आपने एक भी गड़बड़ कर दी ना, ये प्रॉब्लम अनसॉल्वेबल हो जाएगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ। इस प्रॉब्लम का कमाल ये है कि साइन, कमाल है कि सेंसिटिविटी ये है कि इसमें साइन का बहुत ध्यान रखना है, वरना सारा काम खराब हो जाएगा। अब आप गौर करें जरा, अब गौर करें इस चीज को, साइन फिर चेंज हो गया, ठीक है? यस सर। इसका मतलब क्या है, हमें एक और नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिल गई है, वो इन दोनों के दरमियान में। ये पॉइंट समझ आया सारा को?
अब हमने कितने साइन, किसमें कितनी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज हैं? शुरू में क्या बताया था मैंने, कितनी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज हैं? 4 सर, 4। 4 हैं। इसका चार मतलब सर। है हमने कितने साइन चेंज हंट करने, और 2। ठीक है, 2 साइन चेंज हमने कर लिए, माइनस से प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। अब हमारे पास फिर एक बार प्लस से माइनस होगा और फिर माइनस से प्लस होगा। ठीक है, जब हमें जब 4 बार माइनस प्लस हो जाएगा, उसके बाद आप जो मर्जी वैल्यू अज्यूम करेंगे, साइन चेंज नहीं होगा। ये पॉइंट समझ आया? लेट्स से हमें पास यस सर। 4 बार साइन चेंज हमें मिल गया है। अब आप कहते हो सकता है बाद में फिर साइन चेंज हो जाए, आप वैल्यू ले, पॉइंट लेते जाओ, अब जितनी मर्जी जाए, साइन दोबारा चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि सिस्टम असल में भी 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम ही है। इसमें अगर ये सिस्टम 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता तो आपका साइन बाद में आप गलती से 4 ले लेते, होता 5। मैं मिसाल दे रहा हूं, तो इसमें कहीं ना कहीं साइन चेंज फिर हो जाना था। लेकिन आप इसे ट्राई करके देख लीजिए इस प्रॉब्लम को। तो मैं बाकी नहीं हल कर रहा, इसके 2 और आइट्रेशन होनी है, वो आप खुद करेंगे। मैं सिर्फ आपको इसका बता देता हूं कि जब हम सेम तरीके से ओमेगा को लेंगे 1.5 रेडियस पर सेकेंड, ठीक है, तो मैं लास्ट वैल्यू लिख रहा हूं। लास्ट वैल्यू कौन सी? ये वाली। समझ आ गया मेरा पॉइंट? आपने बाकी खुद सेम आइट्रेशन आपने करनी है, सेम ही से। तो आपके पास आंसर आएगा -17.789, जो लास्ट वैल्यू। तो फिर आप गौर करेंगे कि आप प्लस से फिर माइनस हो गया ना, फिर एक साइन चेंज आ गया। इसका मतलब है फिर हमें एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिल गई है। ठीक है, और फिर अब मैं दोबारा एज्यूम करूंगा वैल्यू 2.3 रेडियस पर सेकेंड। तो अब मेरे पास फिर वैल्यू आएगी लास्ट वाली, दैट इज 922.24, विच मीन्स कि फिर एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिल गई है। ठीक है, ठीक है, एक हमें यहां पे ओमेगा 3 मिल गई बिटवीन 0.9 एंड 1.5, और 4 हमें मिल गई बिटवीन 1.5 एंड 2.3। इसके बाद आप कुछ भी वैल्यू अज्यूम करें ओमेगा की, ये माइनस प्लस दोबारा माइनस नहीं होगा। आप ट्राई करके देख लीजिएगा इसको। यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लें। इस पर टोटल 5 आइट्रेशंस करनी पड़ेंगी आपको। अगर आप जी सर ये हमारे पास रेंज आ गई। नहीं समझ नहीं होंगे, जी बोले। सर ये जी हमारे बोले पास रेंज आ गई है। हम्म, आप दो सर जगह ये से हमारे बोल पास रेंज सर ये हमारे पास रेंज आ गई है फ्रीक्वेंसी जी की, कि जहाँ पे साइन चेंज हो रहा है। जी। तो सर अगर हमने यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करनी है फ्रीक्वेंसी की, कि अगर हमें फर्दर इक्वेशन सॉल्व करनी है किसी सिस्टम के लिए, तो हम पुली की फ्रीक्वेंसी या गेयर की फ्रीक्वेंसी सब कौन सी पुट करेंगे? हाँ हाँ, आप आगे इसकी ये जो एज्यूम वैल्यू है ये कैसे लेंगे, ये मैं आपको भी आखिर में बताता हूँ। अगर आपके सिस्टम इससे ज्यादा हो ना जैसे, तो आप फिर आइट्रेशन करते रहेंगे, तो आपको उतने नंबर ऑफ साइन चेंजेस नहीं मिलेंगे। मेरा सजेशन पता क्या है, कि आपको 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम लें। मेरी सजेशन है, बड़े मजे, आपको बड़े मजे की प्रैक्टिस लगेगा, पास टाइम है। आप नॉर्मल एनालिसिस से सॉल्व करें, ठीक है, और उसी सेम सिस्टम को होल्जर मेथड से सॉल्व करें। आपको दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी 99% क्लोज मिलेंगी आपस में। समझ आया? मैं वैसे आपको एक अप्रोच बता रहा हूं, लेकिन उसके अंदर हाई डिग्री फ्रीडम सॉल्व करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग जॉब है, बहुत। इसके अंदर आपने देखा है ना हमने कितना टाइम लगाया। मैं ख्याल है ये प्रॉब्लम अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, आप आधे घंटे में प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। अब इसका आखिरी पार्ट रहता है, लेकिन अगर आप इसकी आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप ऑलमोस्ट इसको आधे घंटे में सॉल्व कर लेंगे। आधे घंटे का ही सवाल है मैक्सिमम। ठीक है, और ये मैंने लास्ट टाइम 25 मार्क्स का दिया था क्वेश्चन। सर अगर ओके, ठीक है, जो जी जी बोले। सर अगर पुलिस जो है बिल्कुल साथ साथ लगी हूँ, मतलब कि जिस तरह सर हार्वेस्टिंग मशीन होती है सर, उसकी मतलब नंबर ऑफ पुलिस होती हैं एक वेट के साथ सर, तो वो सर वो सिंगल में ऐसी कंसिडर होंगी सर? अगर आपके स्टेप, जिसको स्टेप पुली कहते हैं, सर वो मतलब उसमें स्टेप पुली होती है, जो एक ही पुली होती है उसमें स्टेप्स बने होते हैं। यस सर बिल्कुल सर, आप ठीक आप शायद समझ। उसकी बात करें। हाँ, वो स्टेप पुली एक ही मैच होता है।
स्टेप पुली चूंकि ना एक ही मैस से बनी होती है, दरमियान में ना उसे कोई, देखिए आप दो मैस तब कंसीडर जिसको हमें शाफ्ट का पीस होगा और दोनों का फासला आपस में फिजिकल कनेक्शन नहीं होगा आपस में, ठीक है। दो एलिमेंट्स का अगर फिजिकल कनेक्शन नहीं है तो वो बेसिकली दो डिफरेंट मैसेज हैं। अगर दो मैसेज का आपस में फिजिकल कनेक्शन है, वो वेल्ड हुए हैं, कुछ हुआ हुआ है, फिर वो सिंगल मैस होता है। जिससे आपने मिसाल दी स्टेप पुली की, स्टेपर पुली जो होती है, तो स्टेपर पुली हमेशा जो है वो सिंगल मैस कंसिडर होता है। और उसका जे निकालना सबसे ट्रिकी है। जे निकालने के लिए आपको शायद एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज करना पड़ेगा, आप प्रैक्टिकली प्रॉब्लम सॉल्व करें, लेकिन बहरहाल है वो सिंगल मैच। ओके सर, थैंक यू। क्लियर हो गया? ओके, जो लास्ट स्टेप है हमारा वो है आइट्रेशंस। हमने असल में अब एक्चुअल ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 और ओमेगा 4 फाइंड करनी है। उसके लिए हम यूज करते हैं इंटरपोलेशन मेथड। इंटरपोलेशन। अच्छा, अगर मैं इसको ग्राफिकली ड्रॉ करूं ना, ग्राफिकली कैसे ड्रॉ, रफ से ड्रॉ करूं वैसे आपको आइडिया देने के लिए, यहां पे ओमेगा डालूं, यहां पे मैं थीटा माइनस समेशन थीटा ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, असल में अगर आप इस वैल्यू को देखें ना, जो लास्ट नंबर है ये असल में क्या नंबर है, ये वाला जो नंबर है ना, ये असल में है थीटा माइनस समेशन जे थीटा ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय के। अगर सारे मुझसे एग्री करते हैं तो ये दोनों को माइनस करके आया है आंसर। तो बेसिकली अगर मैं यहां पे प्लॉट करूं थीटा माइनस समेशन जे थीटा ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय के, ये तो लेट से अब जहां वैल्यू मेरी प्लस से माइनस हो रही है ना, जैसे फॉर एग्जांपल जैसा मैंने कहा कि जब 0.12 था तो मेरी वैल्यू आई थी, क्या वैल्यू आई थी, 0.7 समथिंग, 0.7, हाँ समझे, 0.7 थी, एक ये पॉइंट आ गया, और जब 0.3 हुई मेरी वैल्यू तो माइनस 0.5 हो गया। तो जब मैं इसमें दरम्यान में लाइन ड्रॉ करूंगा ना, इसको ज्वाइन करूंगा, तो ये कहीं ना कहीं कट करेगी 0 पॉइंट के ऊपर, जीरो, जहां पे वाई की वैल्यू 0 होगी। असल में ये जहां पे कट करेगी ना, ये आपके पास ओमेगा 1 होगा। समझ आया? वेयर वाई इज 0। तो मैं करूंगा कि मैं इंटरपोलेट करूंगा। इंटरपोलेशन अगर रिलेशन किसी के जेन में है तो वो, अगर नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ, होता है इंटरपोलेशन होती है x माइनस x1 और x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1। या कुछ लोग उसको ऐसे भी लिखते हैं, x माइनस x1 ओवर y माइनस y1 इक्वल्स टू x2 माइनस x1 ओवर y2 माइनस y1। दोनों दोनों एक ही है, दोनों को मैंने सिर्फ चेंज किया है, दोनों वैलिड है। इसमें जो x और y अननोन है, ठीक है, x1 और y1, जिस तरह कि मैं पहले, ये आपके पास क्या है, दिस इज योर x1, दिस इज योर x2, ठीक है, समझ आया? ये आपके पास x है, ये आप फाइंड करना चाहते हैं। x1 अपर जो आपने अज्यूम किया, x2 लोअर जो आपने अज्यूम किया, इसके दरम्यान नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी, हमें पता है नेचुरल क्योंकि साइन चेंज हो रहा है। और x1 x2 y1 और y2 क्या है, दिस इज योर y1, दिस इज योर y2, ठीक है। आपको ये बता सकते हैं कि y क्या होगा, क्योंकि हमें तो एक चीज अननोन होगी तो हम फाइंड कर सकते हैं, तो y क्या होना चाहिए? सर एक्स एक्सिस पे वाई सर 0 होता है ना सर, जीरो वो आपने बताया था वो क्रॉस करेगा। जी, जब ये लाइन कट करेगी, असल में वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जब ये लाइन जीरो, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 0। जब आप लेट से, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, गौर से देखिएगा आप, x माइनस व्हाट इज x1, 0.12, ये वाली वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय x2 इज 0.3 माइनस 0.12, ये हो गया, इक्वल्स टू y इज 0, y1 इज, ये y1 ये है 0.726 डिवाइडेड बाय y2 इज, अब y2 ये हमारे पास माइनस 0.56, माइनस 0.56 माइनस, एंड y1 इज 0.726, ये यहां से आप करेंगे, इसको वहां ले जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यहां पे x की वैल्यू निकालेंगे, तो x आपके पास आएगा यहां पे 0.22,
ये माइनस में नहीं होगा। अगर ये माइनस में आ गया ना आपका ये एक्स, मतलब आपने गलत किया कहीं पे, ये मैं आपको बता दूं, ये माइनस में होगा, ये हमेशा प्लस में होगा, ठीक है। ये 0.22 आ गया, ये असल में आपकी ओमेगा 1 है, लेकिन ओमेगा 1 0.22 इंटू आपने इससे डिवाइड करना है इसको, ये जेन में रखना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि असल में हमने इसको नॉर्मलाइज करके वैल्यूज दी थी। एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए आपको अंडर रूट के ओवर जे से मल्टीप्लाई करेंगे, और के ओवर जे कौन सा है, जो आपने रेफरेंस लिया था, समझ आ गया, जो हमने क्या किया था जहां पे हमने डिवाइड। ओमेगा 1 जो कि एक्चुअल इसकी फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, मुझे 0.22 इंटू जे, हमने जो के रेफरेंस लिया था वो क्या लिया था आपको याद है, 32325। सो 32325 डिवाइडेड बाय, और के का रेफरेंस क्या लिया, 0.007, 0.007। तो ये वहां पर आंसर आया था 472.7 रेडियंस पर सेकेंड। ये सारा को समझ आया, ये समझ आया पॉइंट, ये यस सर। नेचर। इसी तरह आपने बाकी 3 भी इसी तरीके से करने हैं, ठीक है। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो क्या करेंगे, वही सेम तरीका है, x माइनस, अब आप x1 लेंगे इसको, और x2 लेंगे इसको, ठीक है, और y1 लेंगे इसको, और y2 लेंगे इसको, ठीक है, और सेम तरीके से सेम मेथड से सॉल्व करेंगे, यू गेट। सो मैं अगर आपको एक और सॉल्व करके जस्ट एक सैंपल के लिए दिखा दूं, सो x1 इज 0.3, x2 is 0.9 minus 0.3 equals to y is 0, y1 is minus 0.56, so minus 0.56 divided by y2 minus y1, y2 is plus 0.732, ये है। यहां से जब आप x निकालेंगे, so x which is your omega 2 now, second natural frequency, ये आपके पास आएगी 0.56, और से मल्टीप्लाई करना है आपने k ओवर j, सेम, ये भी सारी रेफरेंस वैल्यूज हैं, ठीक है। सो ये आपके पास आंसर आएगा 0.56 इंटू, ये भी रेफरेंस लेना है 32325 डिवाइडेड बाय 0.007, आपका आंसर आएगा 1203.4 रेडियंस पर सेकेंड। इसी तरीके से आपने ओमेगा 3 निकालना है, इसी तरीके से ओमेगा 4 निकालना है। तो ओमेगा 3 जो है मैं लिख रहा हूँ 1985.6 रेडियंस पर सेकेंड, और ओमेगा 4 आपके पास आएगा 3266.4 रेडियंस पर सेकेंड। अब आपने चेक करना है कि आपका सिस्टम रेजोनेट तो नहीं कर रहा, तो आपकी फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी है 158, और आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, पहली ही नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, 472, अगली है 900। इसका मतलब है कि आपका इस सिस्टम में रेजोनेंस का खतरा मौजूद नहीं है, आपकी जो सिस्टम है वो प्री रेजोनेंस में ऑपरेट करेगा, यानी कि इसकी जो एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, समझ आ गया, फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, और बाकी तो खैर बहुत ही ज्यादा है उनसे, तो मैच पहली से भी बहुत थोड़ी है। ये पॉइंट सारों को समझ आया। सो ये प्रॉब्लम हमारा एंड हो गया, ठीक है, ये प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे एंड हो गया। आपने 4 नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमने एग्जैक्टली फाइंड कर ली है। अब लास्ट चीज को एड्रेस करते हैं कि ओमेगा कैसे डिटरमिन करना है, ये ओमेगा आपको जो मैंने जो रेफरेंस जो वैल्यू एज्यूम की थी वो किस बेसिस पे ली थी। नॉर्मली ये जो प्रॉब्लम है इसकी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास कुछ एक्सपर्टीज होनी चाहिए इस चीज की, लेकिन मैं आपको एक स्टैंडर्ड तरीका बता देता हूं। आप पहली वैल्यू 0.1 से लेकर 0.15 तक ले लें, कोई भी एक वैल्यू ले लें, दूसरी वैल्यू 0.3 से लेकर 0.5 तक ले लें, तक नहीं मतलब इसमें कोई भी एक वैल्यू आपकी मर्जी है, 0.1 मैंने 1 2 ली थी, आप 0.1 ले ले, 0. मैं आपको एक वैसे एक आइडिया बता रहा हूं। थर्ड वैल्यू आप 0.9 से लेके 1.4 तक ले लें, और फिफ्थ वैल्यू आप 1.5 से लेकर 3.0 तक ले लें।
ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस, ये इसका कोई रूल नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जो मैं प्रॉब्लम, मैंने 10-15-20 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं डिफरेंट तरह के, आपने पीएचडी का प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया इस तरीके से। तो नॉर्मली तकरीबन ये रेंजेस बनती हैं। अगर आपने जो वैल्यू अज्यूम करनी है, पहली 0.1 से 0.5 के दरमियान, 0.15 के दरमियान ले ले, दूसरी 0.3, मतलब कोई 0.4 ले ले तब भी ठीक है, 0.45 ले ले तब भी ठीक है, 0.3 ले ले तब भी ठीक है। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? तो थर्ड वैल्यू 0.9 से 1.4, फोर्थ वैल्यू 1.5 से 3 के दरमियान में कोई भी ले लें, ठीक। तो ये एक मैंने आपको एक्सपीरियंस बेस पे बताया। वैसे नॉर्मली जो है ना, वो ये जो ओमेगा की वैल्यू होती है, ये थोड़ी आपके प्रैक्टिस से डेवलप होती है। आप 5-6 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना डिफरेंट वैल्यूज लेके, तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन सी। इवन अगर आप इसको नहीं भी फॉलो करते, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप 2-3 प्रॉब्लम खुद सॉल्व करें, खुद एक प्रॉब्लम बनाए, खुद कोई भी प्रॉब्लम बनाए, कुछ खुद एक बना ले, कोई आर्बिट्री वैल्यूज दे दें उसको, और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ओमेगा की वैल्यू क्या लेनी है। याद रखिएगा, जितने साइन चेंजेस आपको चाहिए, उससे कम से कम एक ज्यादा आइट्रेशन आपको करनी पड़ेगी। यानी कि हमने अभी टोटल 5 आइट्रेशंस की हैं, हमें 4 नेचुरल फ्रीक्वेंसी चाहिए। अगर आपका बहुत एफिशिएंट है, हाँ ये बात ज़हन में रखें, अगर आपका साइन चेंज नहीं होता, अगर आपका साइन चेंज नहीं होता, इसका मतलब है इसमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं है। ये आप ये नहीं कि उसमें भी आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी घुसा दें। वो आपका, जब आप वहां पे फाइंड करने की कोशिश करेंगे ना, इस तरह करके, आपकी एक्स की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी। अगर आपके लाइट से दोनों पॉजिटिव है, हाँ इसमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, मैं जब आप इंटरपोलेशन करेंगे ना, तो वहां से नेगेटिव में आ जाएगा। तो आपका जब तक साइन चेंज नहीं होगा आखिरी वाली वैल्यू में, तब तक उसके दरमियान में नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। ऐसा हो सकता है कि आप एज्यूम वैल्यू लें और उसमें साइन चेंज ना हो, पॉसिबल है, कोई ऐसी बड़ी बात। फिर इसका मतलब उन दोनों के बाद नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं है, आप एक और आइट्रेशन कर लें। मैंने बताया जो एफिशिएंट, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप 5 में कर लेंगे, 4 डिग्री फ्रीडम है तो 5 में कर लेंगे, 3 डिग्री फ्रीडम है तो 4 में कर लेंगे, ठीक है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो कुछ कुछ स्टूडेंट 10-10 12-12 भी करते हैं और उनकी आंसर नहीं आता, ये भी आपको बता दूं, ठीक है। इसलिए बहुत एहतियात से उसको प्रैक्टिस करनी है। मैं 2 प्रॉब्लम और आपको दूंगा, वो 2 प्रॉब्लम में पूरा सोल्यूशन हुआ है स्टार्ट टिल द एंड। बस ये है कि मैंने किसी में ग्राफिकल मेथड भी यूज किया है, जो मैं आपको ग्राफ बना के दिखाया ना, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इंटरपोलेशन ही यूज करें। दैट्स अ गुड मेथड, एक्यूरेट मेथड, ठीक है। अगर कोई सवाल आपका अब है तो अच्छा, चलें लास्ट चीज मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद अगर आपको सवाल मैं ले लूंगा, अगर कोई आपका है सवाल। लास्ट चीज ये है कि एक तो आपके पास ऐसा सिस्टम आ सकता है जिसमें वन साइड पे कंस्ट्रेंट हो, और एक ऐसा सिस्टम होता है जो कहीं से कंस्ट्रेंट नहीं होता। लाइक ये एक प्रॉब्लम मैं आपको दूंगा, इस तरह का अपलोड करूंगा। इसे कहते हैं डीजेनरेट सिस्टम, डीजेनरेट सिस्टम, ठीक है। इसकी एक फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी 0 होती है। इसके भी असल में 4 ही, असल में थ्योरेटिकली ये 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, प्रैक्टिकली ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इसलिए कि जब इस सिस्टम में कंस्ट्रेंट नहीं है, तो आपको एक मैस को जब तक आप होल्ड नहीं करेंगे, बाकी वाइब्रेट नहीं करेंगे। अब मैं इन सारों को पुश करूं ना बगैर होल्ड, ये सारे चलते जाएंगे, ये वाइब्रेशन नहीं करेंगे। तो मैं किसी एक को होल्ड कर लूं, फिर ये वाइब्रेशन करेंगे। ये पॉइंट समझ आया सारों को? तो प्रैक्टिकली ये सिस्टम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, यानी कि आपने सिर्फ इसमें 3 साइन चेंजेस आपने वो करनी है। 3 साइन चेंजेस आपने जो है वो उसको देखना है सिर्फ, कि 3 दफा। पहली नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसकी हमें नोन होता है कि वो 0 होती है, यानी कि इसके प्रैक्टिकली 4 नॉन जीरो नेचुरल, 3 नॉन जीरो नेचुरल, टोटल 4 नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। पहली 0 होती है, बाकी 3 नॉन जीरो होती है। तो सिर्फ आप 3 निकालेंगे तो दैट्स इट। आप चौथी निकालने की कोशिश करेंगे तो नहीं आएगी, जितनी मर्जी कोशिश कर लेंगे नहीं आएगी। समझ आ गया? सो ये, या तो हाँ कोई ये पूछ सकता है कि सिस्टम दोनों जगह से कंस्ट्रेंट हो, दोनों जगह से कंस्ट्रेंट सिस्टम मैं आपको नहीं दूंगा, इसलिए कि उसको सॉल्व करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। उसके लिए मुझे शायद एक और लेक्चर चाहिए, उस लेक्चर का टाइम नहीं है। सो आपके लिए या तो सिस्टम एक साइड से कंस्ट्रेंट होगा, या वो दोनों तरफ से फ्री होगा। जो एक साइड से कंस्ट्रेंट होगा, उसमें आपने जो जो फिक्स रिजिड एंड है, उससे ऑपोजिट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। जो डीजेनरेट सिस्टम होता है, ये चूंकि इसमें कोई होता है, आप इसमें कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं।
इसमें आप लेफ्ट से करें राइट से करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, प्रैक्टिकली जब आप इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो सिर्फ 3 ही आएंगी, 3 ज्यादा नहीं आएंगी। एक प्रॉब्लम मैं इस तरह का आपको अपलोड करूंगा, अभी करने लगा हूं, जिसके अंदर ये आपके पास 3 है, मतलब ये वाला सिस्टम है। आप कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। दिस इज लास्ट थिंग फॉर माय साइड। सर वो आपने कहा था कि मैं फ्रीक्वेंसी का बताऊंगा कि हम कौन सी वैल्यूज एज्यूम करनी होती है जब ये यूज करते हैं। वो मैंने बताया, मैंने आपको बताया कि बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपको सर शेयर किया है मैंने आपको। असल में जो एजम्पशन है ना, ये एक्सपीरियंस बेस पे होती है, और अपने एक्सपीरियंस से 15-20 प्रॉब्लम सॉल्व करके मैंने अंदाजा लगाया कि अगर आपने लेट्स से 4 डिग्री फ्रीडम, आपने 4 वैल्यूज अज्यूम करनी है, तो आप एक इसकी रेंज में ले लें, 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 प्रोबेबली आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। सर तो एक्सक्यूज सर मी इसमें ज्यादा प्रिसाइज कौन सी होती है नॉर्मली? प्रिसाइज मतलब लोअर सर, एक एंड की तरफ या सर दूसरे एंड की या सेंटर वाली भी ज्यादा प्रिसाइज होगी कि जिसमें साइन चेंज हो रहा होता है? प्रिसाइज से क्या मतलब हुआ आपका? कि सर यानी अगर हमारे पास 0.1 है और 0.15 है, तो सर अगर हम 0.11 लें वो ज्यादा प्रिसाइज होगी या 0.14 लें? नहीं, ये कोई कुछ नहीं कह सकता। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह ये है कि एक्चुअली में आपको पता कौन सा नंबर चाहिए, आपका गैस क्या होना चाहिए? आपका असल में गैस होना चाहिए कि ये आपने पॉइंट मेरे दिन में वैसे एक बात आई आपके सवाल से, अगर ये वैल्यू 0 आ जाए, अब जरा आपने आपने इसका आंसर करना, अगर आपको समझ आए, अगर ये 0 आ जाए, इसका इसका फिजिकली क्या मतलब हुआ? अगर आखिरी में नंबर 0 आ जाए, तो सर इसमें तो फिर सर फ्रीक्वेंसी नहीं होगी ना, वो नहीं फ्रीक्वेंसी सर जीरो हो जाती है तो वाइब्रेशन नहीं होगी। नहीं, इसका मतलब ये है कि जो आपने वैल्यू अज्यूम की है वही इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। समझ आया? यस सर। आपने इतना परफेक्टली इसको एज्यूम किया है कि आपका जब आंसर ये 0 आ गया ना, इसका मतलब क्या है? जो आपने एज्यूम किया वही इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है असल में। असल में ठीक आइडियली होगा। पता क्या होता है, आपको आखिरी नंबर को 0 लेके आना है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको अल्टीमेटली अगर आपका 0 आएगा ना आखिरी नंबर, तो आप समझे यूर पर आपको 4 इटरेशंस करनी पड़ेगी अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि 0 कहाँ पे आएगा। लेकिन डेफिनेटली आपको नहीं पता लग सकता कि 0 किधर आएगा। जिस तरह आप मुझे एक्यूरेसी की बात करिए, प्रिसीजन की बात करें ना, प्रिसीजन का मतलब असल में पता क्या है कि हम वो वैल्यू सेलेक्ट करें ओमेगा की, जिसमें आपके पास इस इक्वेशन थीटा माइनस समेशन जे थीटा ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय के, इसका आंसर 0 आ जाए, तो आपकी वैल्यू एग्जैक्टली प्रिसाइज होगी जो आप वही नेचुरल। लेकिन आप क्या ये 0.1 पे होगी, ये हर सिस्टम के लिए डिफरेंट होगी। मैं आपको तो ये एक्सपीरियंस बेस पे बता रहा हूं, आप इसे डेविएट भी कर सकते हैं। इट्स नॉट आपकी मर्जी, आपके नहीं मैं 0.15 मैं 0.2 ले तो ले, मुझे कोई इतराज नहीं, मुझे कोई 1% भी इतराज नहीं होगा। वजह ये है कि ये जो, हाँ इसमें इजम्पशन मैटर करती है, प्रैक्टिस मैटर करती है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। समझ आ गया मेरा पॉइंट? तो यस जो सर। प्रिसीजन और एक्यूरेसी है वो असल में जो लास्ट वैल्यू 0 के बराबर है वो एक्यूरेट वैल्यू है। उस तक आप गेस कर सकते हैं बगैर सॉल्व किए हुए, मेरा ख्याल नहीं है। मैंने 20-25 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, मैंने बड़ी कोशिश की है, वो गेस नहीं होता। आप तुक्के मार सकते हैं, तुक्के में एक आधी 0 आ जाएगी, लेकिन तुक्का का मतलब होता है एक आधी 0 आएगी। आप हालांकि कैसे, मैं अगर एग्जैक्टली 0 पॉइंट जैसे देखें, मजे की बात पता क्या है, ये आप गौर, आपके एक और चीज में ज़हन में आई आपके क्वेश्चन से, अगर आप वैल्यू एग्जैक्टली 0.22 लें तो आपका आंसर 0 आएगा। अगर आप एग्जैक्टली वैल्यू 0.56 ले आपका आंसर 0 आएगा। अगर आप एग्जैक्टली इसका मैं आपको नंबर बता देता हूँ, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। इसका नंबर आया था 0.924 और इसका आया था 1.52। अब देखें, अगर आप इतने एक्सपर्ट होते आप डायरेक्ट उमेर को 0.924 एज्यूम करते तो आपका आंसर एग्जैक्ट 0 आया था। समझ आया? अगर आप उमेर की वैल्यू एग्जैक्ट 1.52 लेते आपका आंसर 0 आ जाता। लेकिन अब आपको क्या पता कि 0.924 पे ही 0 आना है। इसकी बजाय इतना करने के हम रेंजेस लेते हैं, ठीक है? तो जहां वैल्यू साइन चेंज हो रहा होता है, इसका मतलब है साइन चेंज होने का बेसिकली मतलब ये है कि लाइन 0 को क्रॉस करके साइन चेंज करेगी ना। आप गौर करें, वाई एक्सिस का अगर साइन चेंज हो रहा हो तो उसको एक्स को क्रॉस करना पड़ेगा ना। इसे तो अग्री करते हैं ना?
अगर यस y सर। की वैल्यू प्लस से माइनस हो रही है तो उसको जहां पे वो एक्सिस चेंज कर रही है उस पॉइंट पे उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अब अगर आपकी इतनी प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्टली भी अगर आप एज्यूम कर सकते हैं कि ये इस पे जीरो आएगा तो आपकी आइट्रेशन कम हो जाएंगी, आपको तो 4 आइट्रेशन करनी पड़ेगी, आप 4 में कर लेंगे। अगर आप वो करें तो मैं आपको 25 में 30 नंबर दूंगा शायद, ये 30 मजाक करूं लेकिन ये पॉसिबल नहीं है करना। ठीक है, आपको एक आधी आइट्रेशन अच्छी करेंगे तो ज्यादा करनी पड़ेगी। आप 2 प्रॉब्लम्स खुद हाथ से हल कर लें, खुद अपने प्रॉब्लम बना लें, कुछ भी बना लें, 4 मैसेज लें, उसको खुद को वैल्यूज दे दें, उसको सेम ही प्रोसीजर अडॉप्ट करें और प्रैक्टिस करके देखें क्या आप उसको एज्यूम जीरो पे ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। अगर आप ला सकते हैं तो ये बहुत आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, आई मस्ट। और ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये मैंने कहा कि ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल, लेकिन हाँ इसके लिए प्रैक्टिस बहुत चाहिए। क्लियर हो गया? सर आपने ये यस सर। तो और उसके अलावा एनी मोर क्वेश्चन? जी ठीक है, मैथ्स आपकी आवाज कटी जा रही है। सर ये जो आपने मैथ्स जी एनी मोर सिस्टम का क्वेश्चंस? सर बताया। जी 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 जी। तो आपकी आवाज कट रही है, मुझे समझ नहीं आ रही है, पता नहीं। आप अगर मैसेज करके बता सकते हैं तो मुझे मैसेज करके बता दें, अगर मैसेज करके नहीं बता सकते तो देखें अगर आप आवाज आ जाती है तो। Okay. जो मैथ सिस्टम का वो बात कर रहा था कि ये ऐसे भी हो सकता है जहां पे आपके पास एक कंस्ट्रेंट हो, ये भी हो सकता है। अगर ये होगा तो फिर ये प्रैक्टिकली 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम ही है और उसमें 4 नॉन जीरो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज है। ये इस तरह का भी हो सकता है सिस्टम, यहाँ इस तरह का नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए ना आपको इसको दरम्यान से डिवाइड करना पड़ता है। वो एक लंबी स्टेप, वो मैं नहीं दूंगा, ये वाला नहीं दूंगा। या तो एक साइड से कंस्ट्रेंट हो सकता है या दोनों तरफ से फ्री होगा। जब वो जब अगर वो एक साइड से कंस्ट्रेंट होगा फिर तो इसके 4 है, आप स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, तो आप इसको 5 इसी तरह नंबर देंगे और जिस हमने किया है। हाँ फर्क सिर्फ ये होगा, मैं आपको ये बता दूं, फर्क सिर्फ होगा जहां जे है वहां एम होगा, जहां जे थीटा ओमेगा स्क्वायर है वहां एम ओमेगा स्क्वायर होगा, जहां थीटा है वहां एक्स होगा, लीनियर मैथ्स के लिए। बाकी सेम टू सेम प्रोसीजर भी वही है, तरीका भी वही है, जम्पशन का तरीका भी वही है, हर चीज वही है। ठीक है,